लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में. When I was talking about a quick solution for it, the solution what I see is having some diplomatic discussions, because again we say the Saudi should attack, the Iran should fire a missile, the Turkey should do something that will cause more disasters. We should have more diplomats invest in R&D even in the thought process of what the plan of action has to be. I wanted the discussion to head there, and that is the reason why I was taking what would be the immediate solution. Diplomatic solutions are the need for the hour, and we are not asking, as I was telling, we are not asking Saudi Arabia to send their troops or Pakistan to send their troops or any Islamic country to send their troops. What we expect from these countries, and I am sure with God's grace, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि उन लोगों के दिमाग में भी, उनके भी जहन में भी ये बात चल रही होगी, there should be some diplomatic things, because मौजूदा दौर में we cannot say Iran is going to come there. बहुत अच्छे वीडियोस बनते हैं, टिकटॉक पर हो जाओ या मौज पे हो जाओ कि किस तरह से Iran is becoming stronger and एक अपने आप को glorify कर रहा है. But the perfect solution to this at this point of time, don't you think, is diplomacy? Diplomacy, people talking in the UN, people explaining. The Muslim countries, we would not say that हमको Martin Luther King चाहिए या महात्मा गांधी चाहिए at this point of time. We have people in the Islamic world, एक सबसे जिनकी राह पे हम चल रहे हैं. What is written, everybody knows that. The country, आपने पढ़ा है ना वो? If anybody would like to say that statement, बहुत खुशी होती है वो statement पढ़ के जो मस्जिद अक्सा की दीवार पे. Anybody? The youth? Yes. A country led by Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam will not surrender. Will not surrender. That's it. We will not surrender. So I think that is where we should head towards, is what I personally feel. And now, because we are coming towards the last 10 minutes of the discussion, I would want to understand this, because there are so many learned men. India has recognized Palestine as a state in the year 1988. 1988 में Palestine को as a state India has recognized. There is an embassy of Palestine in India. That is also there. We as Indians, क्योंकि यहाँ पर everybody is an Indian, and we have come here to understand what we as Indians can do to our brothers and sisters who are facing these hardships in Gaza. India recognized Palestine as a state in the year 1988. It has an embassy, and I beg to question every intelligent person who's sitting over here, कि why have we not written a letter or made a representation to the government of India that there is a state which requires medical aid, it requires financial aid, and we as Indians would like to give our donations. There was an earthquake in Turkey and everybody was ready to donate so many things, and it has reached that place. Why do we not, or shall we make a representation? Because यहाँ पर बैठा हर इंसान बार बार बोलने में बहुत अच्छा दिखता है कि अपने आप में एक अंजुमन है. तो why, see, from everyone, from the clergy, from the religious scholars, from academic experts, to teachers, to students, why don't we make a representation? जाके खत भी पोस्ट करना नहीं है, क्या हम मेल नहीं कर सकते हैं? क्या हम इस बात की एक मूवमेंट नहीं चला सकते हैं कि we request the government of India to route whatever we give as donations to the people of Gaza? I would request कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है मैम? Like, is there anything? Because हम, see, speaking up for Palestinians is not speaking up against Israelis. फिलिस्तीनियों का साथ देना यहूदियों की मुखालिफत नहीं है. फिलिस्तीनियों का साथ देना हमास का साथ देना भी नहीं है. मैं तो ये बताऊं, अगर फिलिस्तीनियों का साथ देना हमास का साथ देना है, तो ये बात याद रखिएगा, हमास हैज नो कंट्रोल ओवर वेस्ट बैंक. वेस्ट बैंक पर हमास का कोई कंट्रोल नहीं है. मगर पिछले साल देयर वर 143 पीपल ऑफ पैलेस्टीन हु वर किल्ड. व्हाट जस्टिफिकेशन डज द वर्ल्ड हैव टू गिव? वी आर बॉदर्ड अबाउट आवर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स. हम हमास का साथ as Indians, if the government says no, we will not. But we have a right. The Constitution of India has given us the right to think about, अगर हम इंडियन कल्चर की जो बात करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, चलिए वही बात से ठीक. They are our brothers.
and we would like to do something, just channelize it for us. Speak. You, Mr. Prime Minister, has met Netanyahu. Tell them, explain to them that it is a cause for a cause of humanity. On human grounds, we want to give something. Allow us. Allow the Indian track. Then we will call you as a world leader. कि हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर में वो ताकत है कि वो इजराइल के जरिए से, इजराइल के बीचों बीच से हिंदुस्तान का वो ट्रक जिस पे तिरंगा लहराता हुआ जाएगा, मजलूमों की आवाज बनकर मुसलमान हिंदू हिंदुस्तान के कंट्रीब्यूट करेंगे और आप वो मदद वहां तक पहुंचाओ. इतना सा छोटा सा मुद्दा है. You are so very strong. You have made so many, impactful movements in your life. पूरा हिंदुस्तान सलाम करेगा to the Prime Minister of India if he tells this diplomatically to the Israel Occupational Forces कि आप हमारा जो एड है वो वहां तक पहुंचने दो. We are not asking for anything. हम ये नहीं बोल रहे तुम बॉम्ब मत डालो, हम जो पहुंचा रहे हैं. And this right the Constitution of India has given us. That is one small request. Most suggestion which I would want to talk about would be undoing what the media is doing. I am not sure if मतलब पता नहीं कितने लोग आजकल न्यूज़ देख रहे हैं. अगर जो लोग न्यूज़ देख रहे हैं उनकी जो व्यूअरशिप है हम देखना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी बोल रहा है वो बकवास है. Most of the channels. Because वो लोग जो खाकी चड्डी पहन के निकले थे, if you look at their books, the books take inspiration from Hitler. They have idealized Hitler, that Hitler who has killed the Jews and sent them to the guillotine and the Holocaust. And now they stand in support for those Jews only just because it is the Ummah which is being targeted. तो मीडिया का अगर आप हाल देखें तो जिस तरह से बताया जा रहा है, हर न्यूज को, जैसा अभी मौलाना बता रहे थे, फेक न्यूज को भी इस तरह से फैलाया जा रहा है. और आप ये बात समझ लीजिएगा, आप और हम शायद इस बात को एक्सेप्ट नहीं करें, मगर कंटिन्यूअसली बार बार मैं प्रधानमंत्री की कॉपी कर रहा हूं, बार बार झूठ बोलो, जितना चाहे झूठ बोलो. ये झूठ बोल बोल के हुआ ये है कि people have begun to believe एक ऐसा opinion they have made in the minds of the people. And I think इससे पहले की एक मीटिंग जो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के साथ एक बार हुई थी हमारी, जहां पे उन्होंने ये बोला था कि we have a population of so and so, अगर एक इंसान is able to influence so many of our 5, 10 people of other communities also and tell them कि ये reality है. The media is talking bull, it's talking crap. The media is talking rubbish. This is the reality. उसको अगर हम जिम्मेदारी समझ के करेंगे ना, then we have understood, we have been taught that religious coexistence is a part of living. मैं बोल रहा हूँ जब ये कहा जाता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, I heard it and I believed it कि religious coexistence is essential in the modern world. We have to live with people of other religions also, but we have to be so very influential. So I think this is our responsibility. Every one of us have to influence the people of other communities. Explain to them, not by force. नहीं ऐसा है नहीं, वो mindset से हमको हटके we have to take them. So I think we will be closing the session now, but before I close I would like to add on a few things that the crux or the gist of the session would be from the first panel. I would say that सबसे पहला फरीज़ा जो हम सबका है वो ये है कि हम बहैसियत उम्मा मुत्तहिद हो जाएं. Point number 1, and we have to pray for them. We have to pray that Allah Rabbul Izzat उनको वो हिम्मत दे, Allah Rabbul Izzat उनकी वो तकलीफ कम करे. और ये तभी होगा जब आप कोई भी वीडियो देखो, अगर छोटे बच्चे को देखो तो उसमें अपने बच्चे को इमेजिन करो, अगर बूढ़ी माँ को देखो तो अपनी माँ को इमेजिन करो, फिर
आप बिस्तर पे नहीं मुसल्ले पे पहुंच जाओगे और अल्लाह की बारगाह में अश्क बहाओगे और दिल से जो दुआ निकलेगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद और नुसरत हासिल होगी। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम ये करें, क्योंकि ये दैट इज द मिनिमम थिंग व्हिच वी कैन डू। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आई वुड से कि द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन कि वी आर नॉट सपोज्ड टू गेट डिसहार्टेंड, ना उम्मीद नहीं होना है। ये बात तो सही है कि वो चाहते हैं कि वो फिलिस्तीनियों की मिल्कियत छीन ले, मगर अल्लाह फिलिस्तीनियों को मिलकत जन्नत के बागों की दे रहा है। वो चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों को मार दें, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको शहादत का मर्तबा दे रहा है। तो बेशक हमको इस बात का यकीन करना है कि मुसलमान हैं, उनकी जिंदगी है, और अगर वो जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में जाती है तो मैं फिर से ये कहूँगा कि एक सहाबी ने कहा था कि अगर जंग के मैदान में मौत होती तो खालिद इब्न वलीद बिस्तर पे नहीं मरते। तो बहरहाल उनके लिए दुआ करनी है, बहुत सारी दुआ करनी है। एंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कैन डू, आई थिंक थोड़े से सजेशंस जो हमने लिए हैं, प्रॉपर पॉसिबल सॉल्यूशंस। पॉइंट नंबर 1, रेज योर वॉइस। स्टार्ट, एक ऐसी मुहिम स्टार्ट करिए जहां पे वी रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर नेशन टू अलाउ अस टू सेंड फाइनेंशियल एड, मेडिकल एड टू द पीपल ऑफ पैलेस्टीन। एंड वी एज इंडियंस, हम जो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन मानते हैं, उस मुल्क का झंडा एक ट्रक पे लहराता हो, जिस मुल्क में मजलूमों के लिए दवाएं, भूखों के लिए राशन हो, और वहां तक वो पहुंचे, तब हिंदुस्तान फख्र से कह सकेगा कि हम इस दुनिया में अमन फैलाने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू क्रिएट अ मूवमेंट फॉर दैट। एंड एज मैडम वाज सेइंग, वी हैव टू स्टार्ट। ऐसा नहीं कि कॉरिडोर खुलने के बाद हम ढूंढने निकलेंगे। वी हैव टू डू सर्टेन काइंड ऑफ प्लानिंग, एंड दिस इज नॉट अगेंस्ट द लॉ। स्टैंडिंग अप फॉर पैलेस्टीन इज नॉट standing up for killing of the Jews. No, we are not telling that. We are telling कि जो human rights minimum मिलने चाहिए, we should be giving it to them. And inshallah ताला, मैं before I close, I would definitely like to recite what Faiz Ahmad Faiz said कि हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे जब जुल्म सितम के कोहे दरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सरों पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। हम देखेंगे जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। हम देखेंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है, हाजिर भी, जो मंजर भी है, नाज़िर भी। हम देखेंगे। Thank you so much everyone for your august presence. I would like to have the closing comments from Riyaz Ali Khan sahab.